Good evening, good afternoon, and welcome to the RAW podcast. And this is the full Backlash review. Okay, so first of all, let's start off with an apologize because Yes. we know that we were too late for any video. हमने backlash predictions post नहीं किया. उसके पहले जो routine वाले videos है वो भी post नहीं किया just because he was busy with his short film thing and I was busy because of my family reason. My sister was actually hospitalized, so yeah, so it was justified. So now we are back, and what do we expect? Okay, here's the thing, right? मेरे को Backlash पहली बात तो बहुत अच्छा लगा. Like the event itself was good. Okay. Okay, because सब चीज़ predictable है. Correct. Number one, start to end. Correct. हर एक मैच का विनर सबको पता है कौन अंदर जा रहे थे. There was nobody who was like, हाँ, Pat McAfee का चांस है भाई. Like कोई ऐसा सोच नहीं रहा था. Everybody knew what was happening, but Correct. solid show. मेरे लिए 8 out of 10. Two Okay. reasons. This could have been a 10 on 10, but there are 2 marks. I'll explain further in a minute. Okay, so I'll give it a 8.25 because the only reason I gave 2.25 more than you because मेरे को जब रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस हुआ था, जॉन सीना का जब मैच था मेन इवेंट में, उस टाइम पे आई थॉट द क्राउड वाज टू एक्टिव, टू मच एक्टिव. तो क्राउड के लिए पॉइंट्स है सर. मेरे को क्राउड के लिए मेरे को अच्छा लगा वो चीज़ जब रैंडी ऑर्टन और रैंडी का जब ऐसा गाना बजता है और जब लोग गाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है. और जब जॉन सीना सक्स का चैंट सुनने मिलता है ना, और ज़्यादा अच्छा लगता है. मेरे को तो सबसे पहले आई डू थिंक इट इज अनफेयर टू कंपेयर सेंट लुइस विद फ्रांस, बट भाई बैकलैश फ्रांस का क्राउड तो नहीं था भाई. ऑब्वियसली नॉट. वो एजे स्टाइल्स मोमेंट मैं आज तक भूला नहीं है. लाइक इट्स लाइक यस्टरडे फॉर मी. Exactly. दिस वाज स्टिल अ प्रीटी गुड क्राउड, आई वुड से सो. इट वाज अ गुड क्राउड. ओके, सो द फर्स्ट मैच वाज द फेटल 4-way मैच between it was for the United States Championship between Jacob Fatu, Drew McIntyre, LA Knight and Damien Priest. ओके. ओह शिट, धीरे चालू है ना. ओके, उसमें तो रिकॉर्ड हो गया होगा. Okay, ठीक है. सॉरी फॉर दैट. बट ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच मेरे को इसमें बहुत कुछ अच्छा भी था, बहुत कुछ बुरा भी था. बहुत कुछ बुरा नहीं बोल सकते, बट इट्स कंफ्यूजिंग बिकॉज़ लाइक जो 4 टैलेंट थे उसमें, There were pros and cons. जेकब फाटू इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट. लाइक क्राउड उसको हेट कर ही नहीं सकता भाई. Crowd was literally cheering for him. I think he is gonna turn babyface या फिर वो हो चुका है. You know, he reminds me of a South Indian gangster in a Tamil film that is loved. You know, like Jacob Fatu has the same vibe. Okay. It seems like that. It's like he is like if he was in a South Indian movie where he played a gangster but a lovable gangster, Jacob Fatu would be one of them. Oh, okay. You know, ठीक but है. वो बहुत entertaining है. Drew McIntyre and Damien Priest भाई. आपको सब यहाँ पर I think. यहाँ पे like. Okay, ठीक है. The So Drew you McIntyre. were so these two guys were busy fighting with each other. उनको टाइटल का फर्क नहीं पड़ता. मेरे को ये मैच 2 अलग-अलग सिंगल मैच लगा. हाँ, actually that's the one of the cons where it's like it wasn't a fatal 4-way. It was like सबका अपना मस्ती चल रहा है. Correct. LA Knight was actually going after the championship. Drew Correct. McIntyre and Damien Priest उनकी अपनी चल रही है मस्ती भाई. Correct. But I like this rivalry. Like Drew McIntyre is my goat bro. Like Okay. उसके जैसा hater बनना है like. Okay, so here's the thing. Before WrestleMania, we were talking about कि ड्रू मैकिंटायर और डेमियन का WrestleMania में मैच क्यों हो रहा है. Yeah, right, exactly. ठीक है. बट अब ऐसा लग रहा है कि पहला मैच जो WrestleMania में हुआ वो अच्छा हुआ. Exactly. अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ. To be fair, exactly. Like And I can't wait for this feud getting continued again भाई. मैं I'm मतलब buckled up. देख, मेरे को उनका जस्टिफिकेशन अच्छा लगा. Correct. कि मतलब ड्रू मैकिंटायर ने जब चैंपियनशिप जीता उसने कैश इन कर लिया. मनी इन द बैंक में जब उसने कैश इन करने का ट्राई किया. टेक्निकली ये feud एक WrestleMania 40 से चालू है. हाँ. जब मैं मनी द बैंक कैश इन हुआ था. बट ये लेवल ऑफ हेटरेड अच्छा लगता है मेरे को. द मिड कार्ड ऑफ द स्मैकडाउन इज बिकमिंग वेरी गुड. दैट इज द प्रो. Yes. कॉन्स में भाई मेरे को बताओ ये ब्लड लाइन में कितने मेंबर हैं. Exactly, bro. Okay, like this was not special for me. Okay, even I just Jeff found Cobb? out about this. Jeff Cobb is Jeff Cobb. Jeff Cobb, okay. So I have seen some of his stuff before in the New Japan circuit. मेरे को reels आते थे when the rumors were showing up. I've never seen him. हाँ, नहीं कहीं मेरे पे को भी नहीं देखा. like it was like more bloodline members का मैं वीडियो देख रहा था ना, तो Zilla Fatu was one of them. Hikuleo was one of them. And Jeff Cobb was a rumored name, but वो confirm नहीं हुआ था. But ये आदमी तो आ ही गया before Zilla Fatu and Hikuleo, which is shocking. But it's not shocking the way it happened.
yeah, there was another bloodline member. Okay, dressed in black. is he still a Samoan because उसके हाथ में tattoo नहीं था? That's the Because thing. it's their identity. हाँ, तो I don't know. That's the thing. Like they are family. Technically, they are in the family. Okay. But the entire character of some ये मामा का Samoa बेटा, जो- चाचा का बेटा, वैसा हाँ, कुछ इसका है। बेटा, उसका मौसे का लड़का, Yes, yes, सबको yes. पकड़ लेते भाई. Okay, so but what was Solo Sikoa? चल जेफ कॉब का डेब्यू हुआ, I can still agree. What was Solo Sikoa doing there? मतलब उसका Haircut रोल क्या था कि भाई ठीक है, अगर मेरे को जब ऐसा लगा कि पहले जब उसने जेकब फाटू को ड्रैग किया ना, मेरे को लगा खत्म, हमें जेकब फाटू जाने वाला है. Okay. Like in the sense I was routing for Solo Sikoa and जेकब फाटू उस मोमेंट से ही. Wait, like in the sense it's like I was also rooting for like Solo Sikoa heel turn. Like I was like अब मारेगा. Like I was actually waiting backlash में ऐसा होगा, but some other circumstances Jacob still retains. Jacob इतना powerful है ना कि without interference या with interference भी वो जीत सकता है और we will believe it. And if you notice, Jacob Fatu was not so much happy with that interference. हाँ, मतलब तू कौन है मैं? Exactly, उसने बोला था कि मतलब वही, he was like कि ये मेरा मैच है, मेरे को खेलना चाहिए था पूरा. हाँ, like I still don't understand. Like if you have Jacob Fatu in the match, उसको interference की जरूरत नहीं है. Easy enough. Yes. इसको ना बीच में रख देते because मेरा charging बार जा रहा है. Okay, ठीक है. And in the sense it's like Jeff Cobb का debut was not the problem, it's the way it happened also. Same repeat Roman Reigns type bullshit था वो. Repeat था and I did not like it, but this match was a good 7 out of 10 purely talent. It was a 7 out of 10 match. Okay. हाँ. So moving on to the next match, which was Lyra Valkyria versus Becky Lynch for the Women's Championship. And we have never been more right. This channel has never been more right in the fact कि Lyra Valkyria was the right champion. ये बात की मैं pride लेता हूँ, ठीक है. हम लोग ने start से बोला है कि Lyra Valkyria is a fantastic women's intercontinental champion. Exactly. And there are so many people who are not getting behind that gimmick. I understand why. ठीक है, एक हद तक समझ सकता हूँ. But my goodness यार, like this was the proper like main event level. Main event पे वो NXT level shine हो गया finally. It was an NXT stand and deliver का match. मेरे को ऐसा लग रहा था. That is a compliment. Okay, first of all, that's a compliment. And Becky Lynch was so good. She was Becky good, Lynch but was I awesome. just have one problem with Becky Lynch की. You remember वो Becky Lynch का double title वाला reign? Yeah. तब I loved her at मतलब उसके लिए respect was at the peak. But I can't see Becky Lynch as a heel. That's the thing. We loved Becky Lynch. Becky Lynch, the man, she lives the tagline. वही like I जैसे कि जॉन सीना क्लेम करता है कि he lives hustle, loyalty, respect every day. So वैसे ही she lives the man वाला tagline. She should not be a heel. Okay, Charlotte एक टाइम पे heel हो सकती है. फर्क नहीं पड़ता. She has to be. She heel, has bro. to be. She's the Randy Orton of Becky's John Cena. Okay. If you are trying to compare it, अगर से women's इसमें जाएंगे तो Becky is the John. But Charlotte is Randy. I can't agree Becky Lynch को मतलब heel क्यों बना रहा. अगर heel बना भी दिया है तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के लिए दे देना चाहिए था चैंपियनशिप को. बट वो नहीं हुआ वो चीज़. I'm happy. The thing is, Lyra Valkyria को push करने के लिए ये पूरा feud हुआ था. And this Becky is Lynch. not going to stop. This is not a one-off This is a good feud. I hope ये Saturday Night Main Event पे भी जा सके if Correct. possible because the match was that good. But unfortunately, it has been reported that she has a broken nose. So get well soon, Lyra Valkyria. It was an awesome match. But well उसके वजह से deserved. she shouldn't relinquish the championship. Oh please no. Please no. Yeah. Exactly. But the match was overall a 9 out of 10 for me. Man. It was so good. It was an 8.5. वही. Just because Becky Lynch का character and थोड़ा सा build अगर होता है ये storyline. Exactly. There was not enough time to build, bro. Okay. Like, So the next match was the Intercontinental Championship between Penta and Dominic Mysterio. Okay, so how have you been liking Dom as the Intercontinental Champion? First question. Okay, so WrestleMania prediction video में if you all know मैंने predict किया था कि Finn Balor जीतना चाहिए because he deserved more than Dominic उस time पे because we have not seen Finn as a champion since he has lost NXT Championship. Yeah. उसके बाद से नहीं बना ना. He's just been a tag. मैं tag को गिनूंगा singles केस में. तो Dominic as a champion मेरे को ऐसा लगता है कि कोई एक बच्चे के हाथ में टाइटल दे दिया हो. Yeah. जो बच्चा लॉलीपॉप के लिए मतलब मांगता था पेरेंट्स से उसको चैंपियनशिप दे दिया. I actually kind of disagree. मेरे को लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो का विक्ट्री थोड़ा डिजर्व्ड था because like
if work rate के हिसाब से he was right behind Cody Rhodes in matches and ये and WWE में टाइटल्स ऐसे नहीं होता कि मतलब हाँ स्टोरी के हिसाब से भी, मतलब स्टोरी के हिसाब से तो होता ही है, but it's always a reward. Like Zelina Vega is a US champion because of the work rate she has done. She deserved it. So I think किसी को भी फर्क नहीं पड़ता. If you ask कि किसी से भी अगर तू जाके पूछेगा कि चल बता women's US champion कौन है, सोचने में टाइम जाएगा. But that's actually so the main point here is, see, I might be too harsh for Dominic, but okay, he is a good talent. जब उसने अपने पापा के ऊपर बैकस्टैब किया था, the feud with Rey Mysterio. The feud with Rey Mysterio, I loved it. I really loved it, and I'm expecting, I'm that kind of a guy who, मतलब I'm that kind of a viewer जो डोमिनिक मिस्टीरियो को ऐसा बिना चैंपियनशिप का भी देखेगा तो अच्छा लगेगा. वही, लेकिन डॉम डजंट नीड अ चैंपियन टू बी अ गुड सुपरस्टार. एग्जैक्टली. अभी क्या हो गया पता है कि पीपल आर सपोर्टिंग डॉम. सो वो जो कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि इसके पहले मतलब these are two extreme ends. इसके पहले क्या होता था कि लोग उसको बोलने तक नहीं देते थे माइक पे, like that. अभी ऐसा होगा कि सब लोग बोलने दे रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं. जो जिस चीज़ के लिए डोमिनिक फेमस है कि इतना हेटेड गाय, ठीक है. सो वो चीज़ आई थिंक अभी शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है. बट ठीक है, kudos to Penta. To be fair, it's like it was a fantastic match. Okay, I actually love Dominic Mysterio. He was one of the guys. Judgment Day as a faction was something that I was behind since day one. Like मेरे को बहुत अच्छा लगता है faction. Correct. Though it has been stale in their run or whatever, but I love this faction a lot. And Dominic Mysterio being a champion, I have actually no problem. I wanted Finn to win as well, but we all predicted that he was going to be pinned. Like, but yeah, coming to the actual Backlash match, it was a fun talent. I hated the finish. I did not like it because again it was the Judgment Day ending. Exactly. Carlito आया, फिर Shady and Finn आया. The biggest part of the match was the referee going you and the crowd cheering get out. Okay, it's a bold statement. Please, Paul Levesque, अगर तुम देख रहे हो, sorry, हिंदी नहीं समझेगा. Please, Paul Levesque, if you are watching this video, I'm damn sure that you have many more good things to do. But please release Carlito. Why? Whoa! Why? Please release Carlito. क्यों? Why? He's not that bad. No, release? bro. Out of all people? Exactly. ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बंदे को रिलीज किया है, ब्रॉन स्ट्रोमन के जगह पे कार्लिटो को होना चाहिए था. Because that's a hot take, bro. क्यों bro? एक बात बता, कार्लिटो को तूने मतलब क्या देखा है तूने? Exactly. Okay, to be fair, it's not like Carlito is a bad talent. He's the funny guy of the group. But I agree what you're saying. ठीक है, Carlito isn't really adding much to the Judgment Day. इसका existence से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. Damn. तो मतलब ऐसा जब वो ऐसा आता है ना कि इंटरफियरेंस करने को, मेरे को चिढ़ होता है. I get irritated. Then he's a good heel. That means you're admitting he's a good heel. That means that's why he's in the company. But the Braun Strowman release was mostly because उसको ज़्यादा पैसा दे रहे थे और उसके returns उसको ऐसे लग नहीं रहे थे. Which is bullshit. And sadly अभी वो आने नहीं वाला कभी. Yeah, he's retired. But ठीक है, but the finish was so bad. And also El Grande Americano. To be fair, I don't like this character. Okay, and Michael Cole ने एक गलती कर दी थी कमेंट्री में, मैंने सुना था कल कि एल ग्रांडे अमेरिकानो, मतलब जब ही वॉज कॉलिंग आउट एल ग्रांडे, उसने एल ग्रांडे अमेरिकानो बोला था चैट गेबल और वॉट एवर, ऐसा कुछ तो बोला था. सो उसने खुद रिवील कर दिया कि मतलब I don't think that was a mistake. I think it was deliberately किया होगा. ठीक है, but match how would you was rate good. this match? 4. Man, it was okay. The thing is, the match itself अच्छा था, like because the thing is Dominic Mysterio finally aggressively खेल रहा था. हाँ. He wasn't being a bitch. He was like मैं तेरी मारूंगा. But then the interference spot killed it so much for me. I was like 5. Okay. Middle of the line. Man. This match, the next match, भाई क्या match था ये, मतलब ठीक है. This was more of a squash match. It's similar to a squash match, but it was entertaining. ठीक है, Gunther versus Pat McAfee. कभी तेरे को एक पॉइंट पे भी लगा कि Pat McAfee हराने वाला? No.
Okay, first of all, it's obvious. जिस तरह से लोग उसको हाइप अप कर रहे थे, क्राउड वाज हाइपिंग हिम अप, एंड माइकल कोल तक हेडफोन ऐसा फेंक के आ गया था उधर. Yeah. Okay. Again, this match is fantastic. पहली बात तो if you go and watch Pat McAfee का matches ना, he can wrestle. He can Pat do good McAfee stuff. versus Austin Theory. Oh. Pat McAfee versus WrestleMania. Adam Cole NXT में. Yeah, he was in a War Games match. A lot of people don't even remember that he was in a Correct. War Games match, bro. Correct. But okay, here's the thing, right? Dude, the match was the opponent is Gunther, bro. मतलब yeah, like वही Gunther. It's अभी वो एक शेर होता है ना जिसको एकदम ऐसा गंदा वुंड पड़ा है रेसलमेनिया में. अभी ही इज रिकवरिंग अ वुंड, एंड Pat McAfee and Gunther. Pat McAfee is not even a full-blown wrestler, bro. Yeah, he's like. But how did he even think to challenge him? मतलब कैसा? वही like okay, here's the thing, right? This is not a squash match in the sense कि what I did not like is कि वो और squash match क्यों नहीं हुआ? Like you know, it was a little bit exactly. like why was Gunther fighting back so much, bro? The whole point of this match was कि Pat McAfee बस Gunther को गिराने का ट्राई कर रहा है. हाँ. मतलब एक्चुअल गिराना मतलब मैट पे गिराने वाला ट्राई कर रहा था. Not to win this match. Win तो अलग बात है, वो बात की बात. वही like वो बस लात मार के, चॉप्स मार के, सॉरी, पंचेस मार के गिराने का ट्राई कर रहा था उसको. ठीक है, which is agreed because एग्जैक्टली गंतर ओपोनेंट है भाई, तो ऑब्वियसली इतना तो होगा ही. इफ अगर कोई चैट गेबल होता तो मैं मान भी लेता एक पॉइंट पे कि पैट मैकेफी हरा भी सकता है उसको. बट ठीक है. What was your take on this? My take on this is that I like the match. I like the presentation of it and the way it was executed. I wanted more of it. I wanted more of it as well. But what I was not okay. Here's the thing. They gave me a better product than what I was expecting. I was expecting Gunther आएगा Pat McAfee को 5-4 मिनट में खत्म करके and it will move on to the main event. I thought it was that. But I'm glad that it was more than that. Storytelling था उसमें, hype up हो रहा था. Pat McAfee gave his best and Gunther also showed some respect. Michael Cole almost died. Michael Cole almost died. उसको power bomb पड़ना. Oh man, I was so ready to see it. I was so ready. But Wade Barrett was also great in commentary वहाँ पे. मेरे को एक पॉइंट पे लगा कि Wade Barrett भी आ जाएगा अंदर. Yeah. You know what's actually crazy about this match is because Kofi Kingston lost his WWE Championship in 6 seconds. Do you remember that? Yes. To Brock Lesnar. So my thing is कि why Brock does Lesnar. So why does a company feel कि एक wrestler को squash treatment देना is a good thing, even if it's Brock Lesnar, even if it's like you want to show that Brock Lesnar. Why is it that WWE is like हाँ हम इसको 6 सेकंड में हरा देते हैं, इसको 4 सेकंड में हरा देते हैं, एरिक रोवन को 6 सेकंड में WrestleMania में हरा देते हैं. But Pat McAfee versus Gunther has to be a full-blown match. You understand that? I understand that they're trying to do something different and it is a good product. But I hope if Pat McAfee is getting a proper match, no other wrestler should be in a squash match. Like no other wrestler. Like that's my bar, because if a non-wrestler can have a good fight, wrestlers should have a better fight. Okay, so here's my take on this because अभी जो तूने बोला कि कोफी किंगस्टन को एक ऐसा स्क्वॉश मैच ही था, वो ऑब्वियसली 6 सेकंड वाला मैच था. ये अगर देखा जाए तो उसके टाइम पे ब्रॉक लेसनर ओपोनेंट था because he didn't stand a chance to retain the championship. Kofi. Yeah, but it could have been a fight. Yeah, it could have been a fight, but and it was the season premiere of SmackDown, तो कुछ ऐसा इंडस्ट्री चेंजिंग ऐसा दिखाना था तभी. But अगर देखा जाए तो गोल्डबर्ग ने भी हारा ब्रॉक लेसनर को. Exactly my point. Like Goldberg just spearing jackhammer और जिता दिया उसको. Like and he's Brock fucking Lesnar. वो squash हो रहा है. Brock Lesnar is being squashed. Like that's what I'm saying. If wrestlers could be squashed in seconds and then Pat McAfee is getting a full-blown match, इसके बाद से I don't want to see wrestlers being squashed. That's my thing. Like if any other wrestler is being squashed in 5 or 6 seconds, you're not being strength, you're being stupid. Okay. Pat McAfee is not someone you should protect. I'm sorry, he's a commentator. Because he should have tapped. What I hated about the finish is he didn't tap, he passed out. Correct. इसमें still Pat McAfee won. Agreed. I'm sorry, Gunther is looking weak here and that's a problem because he is your best guy. He's your next Brock Lesnar, he's your next Gunther, to be honest. Brock Lesnar, next Gunther. He is your next top guy, dude. He's gonna be a next proper beast. You cannot have him a 50-50 with Pat McAfee. I had a problem with that. This match on a story like actually technically basis पे 8 out of 10. Correct. But if you look it from Gunther's perspective, उसके character के लिए it's a 6 out of 10. Okay, agreed. But still, I would rate it 8.5.
मतलब आई लाइक द क्या बोलते हैं हाउ द वे WWE कुक्ड इट, बट yeah, the point I agree to him because obviously अगर पैट मैकफी को स्क्वॉश नहीं कर रहे हो तुम लोग वही तो भाई तो फिर किसी और को भी मत करो ना. वही like wrestlers themselves, like wrestlers specifically should never be squashed अगर Pat McAfee is getting a 50-50 match. Yeah, correct. वही. So moving on to the main event, अभी तो मेरे को जी भर के बात करने का है इसमें. Oh man, this is the main event. So main event, the last real champion, the greatest of all time, John Cena. Defending his undisputed WWE Championship against the Legend Killer, the Apex Predator, the Viper Randy Orton. Okay, so again ये उस एरा में बड़ा हुआ था. मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक फ्यूड विटनेस किया मैंने. मतलब it was pretty nostalgic for me. कल जो मैंने मैच देखा था इन दोनों का, because I've seen it before. I've seen this happening before. Yes, exactly. बहुत बार देखा है मैंने. बट ब्रो तू बोल मैं लास्ट में बोलता हूँ. ओके, फॉर मी इट वाज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लाइक आई विटनेस्ड अ रैंडी जॉन फ्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम. मैचेस मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा है बट लाइक फर्स्ट टाइम देखा है अ फ्यूड लाइक उसके मैचेस बहुत बार ऐसे इंटरनेट पे आई हैव गॉन थ्रू और सीन देयर ओल्ड 2007-8 के भी मैचेस देखे मैंने. लाइक आई हैव लाइक रेसलिंग का आई विल से हिस्टोरिकली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मीडिया थ्रू इंटरनेट, अ लॉट ऑफ देम. लाइक मैंने एटीट्यूड एरा के भी बहुत सारे एपिसोड्स देखे, मैचेस भी नहीं. एंड आई हैव सीन मैचेस, बट दिस इज एक्सपीरियंसिंग इट रियल टाइम. Like was a real time experiencing John versus Randy, which is insane to think about, right? Like जब मैं पैदा हुआ था वो डेब्यू किया, and now I am a full blown adult, and ये कुछ ही महीने में I will be legally allowed to drink as well. So it is insane. But this match was fantastic. It was a finisher fest, which was a good thing. You know, it was a show, बोलते ना extravaganza था मेरे लिए, with the amount of RKOs and attitude adjustment. What I loved about this match, my favorite spot and my ending point of why this was a 9 out of 10 match is Randy Orton gives John Cena attitude adjustment टेबल पे. टेबल टूटता नहीं है. They improvise on the spot, नया टेबल निकल उस पे गिरा. ये सही था यार वो. That was good. What would you say about that match? Okay, so this feud, मतलब I was excited for this feud, but team, if you observe last 3 episodes से, मतलब weekly episodes में यही चीज़ हुआ है कि जॉन सीना कम्स आउट, प्रोमो करता है वो, पीछे से आरकेओ पड़ता है उसको. आई वॉज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि कुछ अलग कर सकते थे, मतलब थोड़ा सा, मतलब द बिल्ड थोड़ा सा अलग हो सकता था. बट ठीक है, इट्स जस्टिफाइड बिकॉज रेसलमेनिया और बैकलैश में ज़्यादा टाइम नहीं था. इट वॉज लाइक 3 weeks. तो आई वॉज स्टिल एक्साइटेड फॉर दिस फ्यूड बिकॉज अगर तुम ये एक ऐसा मैच है मेरे हिसाब से कि अगर तुम पूरा स्टोरी भी बिल्ड नहीं करोगे ना, थोड़ा सा भी 0% पे रहेगा ना स्टोरी, दोनों को फेस ऑफ भी नहीं करोगे मैच के पहले एंड सीधा मैच पे बुलाओगे, आई वुड स्टिल लव इट बिकॉज दिस इज दैट काइंड ऑफ अ मैच फॉर मी. सो आई लव दिस मैच. मतलब एक पॉइंट पे लग गया था मेरे को कि भाई, मतलब 2 रेफरी गिर गए, ठीक है. उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने, मतलब जब आरकेओ लास्ट में जब लगाया, आई वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड कि हो गया भाई, रैंडी के पास आ रहा है टाइटल. बट स्टिल जॉन सीना इज जॉन सीना. उसका लो ब्लो, ही लो ब्लोड रैंडी ऑर्टन अपेरेंटली, एंड देन टाइटल से भी मारा. एंड वो भी नहीं कि टाइटल से मारने के बाद उसने ए लगा के पिन किया, ऐसा भी नहीं, टाइटल से ही मारा और तभी पिन कर दिया. सो डोंट यू थिंक कि दिस, मतलब ये एक और बार होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग ने लास्ट टाइम करके बोला था. इट वाज एडवर्टाइज्ड एज लास्ट टाइम एवर, एंड आई एक्चुअली बिलीव इट्स द लास्ट टाइम एवर. नहीं यार, द रीजन आई से इज बिकॉज आई डोंट थिंक जॉन एज अ रेसलर, उसका रिटायरमेंट इज अबाउट हिम. If you make it about Randy when John is his last match, it becomes both Randy and John's thing. Like if you think about it, Randy's last opponent should be Cody Rhodes. For me, like if you really अगर वो conversation में जा रहे हैं, a full circle thing where it's like he's putting over the young talent. One thing that he was desperately criticized for by the 2 young talents को bury करता है. Cody's not a young talent, he's an established champion, but he's the next top guy.
So I think it's gonna be Cody Rhodes' last opponent. Okay, but this match being the last match, I feel it was a fantastic send-off for the rivalry. For example, like दोनों एक hero एक villain, and इनका last match is role reverse. you will be shocked. मैंने अगर अपन ने prediction video किया होता तो तभी मेरा prediction Randy Orton के साथ होता. Oh man, I was no, how? Like John Cena just now won. I was like, no championship are gonna be changed. See, yeah, nothing was like at least in terms of result, there was nothing unpredictable about it. The thing is, Randy Orton is fighting in his hometown. Yeah. ठीक है. And वहाँ पे जब तूने notice किया रहेगा जब Alicia Taylor was announcing the both of them, जब रैंडी ऑर्टन का बोला कि फ्रॉम सेंट लुइस में, क्या क्राउड ने जो चीयर किया उस टाइम पे. तो ये छोटे छोटे डिटेल्स की वजह से ऐसा लग रहा था कि एंड रैंडी ऑर्टन इज रैंडी ऑर्टन. वी कांट राइट हिम ऑफ. मतलब जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन में अगर प्रेडिक्ट करने बोलेगा तो मतलब रैंडी ऑर्टन इज नॉट ऑस्टिन थियरी, ही इज नॉट चैट गेबल, ही इज रैंडी ऑर्टन जो बिलीवेबल लगता है हराने को. अगर कोई भी चैंपियन हो, अभी जे उसो के सामने जाएगा तो बिलीवेबल लगेगा ही कि रैंडी ऑर्टन है सामने भाई, तो थोड़ा सा मतलब है, डर तो रहेगा. बिकॉज लाइक up until that point the people were saying कि उनका 50-50 अभी ये है, and this will decide the factor who is the better guy. And I love this finish, not the finish itself, but I love the result of it is because technically it's still a 50-50 because John cheat करके जीता है. Exactly. So it is still like no one's better or worse off. That was beautiful about it. But let's come back to the actual finish of it. R-Truth is the one who interferes. R-Truth के वजह से ये मैच रैंडी के हाथ से गया है. Yeah. R-Truth only because of R-Truth. Okay. एक पॉइंट पे भी तुझे लगा कि R-Truth आके भीख मांगा जॉन सीना के? No, but for good reasons I was hoping that it wouldn't happen. Okay, this is a joke, guys. I'm sorry. Okay, R-Truth is a good wrestler, he's a good talent, he's a good entertainer, he's a treasure. Not for this match, it was not required. Any other feud, even though I am not a Randy John connoisseur जो मैंने बहुत सालों से देखा है, I did not want anyone else to interfere. This should not have been an interference spot. A low blow and a title shot would have been enough, or at least or any other. But why? My goodness, I rolled my eyes to the back of my head बोल के कि are you seriously considering this as an actual storyline? And then R-Truth post match conference में आता है, it's like भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. Even though लोग बोलते हैं कि तुझे कुछ करना नहीं आता, मैं तेरे साथ हूँ भाई. And then just attitude adjust him on the table, and it's like I want something different now. अभी हो गया ये title shot interference, and मतलब Travis Scott missing था तो R-Truth को ऐसा लग रहा है. That's what it felt like. No, but you know, here's the thing. R-Truth is much better. Much better. That's what I was going to say. Somehow R-Truth being involved in this interference makes more sense than Travis Scott. Okay, do you think in WrestleMania if this would have happened? No. I think R-Truth was a better fit for WrestleMania interference, and this should have been a Travis Scott interference. Swap. I want to live in a timeline where in WrestleMania main event में R-Truth interrupted Cody versus Cena. But this was a far better match than Cody versus Cena. Let's be real. This was far better than the WrestleMania main event. The match, उन लोग का match messed up because of solely because of the finish and Travis Scott. Right. But yeah. Same here. R-Truth, यार नहीं. Yeah, exactly. There is not much to elaborate than the fact कि why was this a thing? See, अगर R-Truth एक ऐसा सोच कि ना, अगर R-Truth अगर एक पॉइंट पे नहीं आता तो did you believe at any point कि रैंडी ऑर्टन जीत रहा है? I had because my RKOs to only John Cena. मैं बाकी का RKOs की बात नहीं कर रहा हूँ जो officials को लगे. Simply because I don't think his 17th world championship. 5 RKOs 2 A's. Why? Because it's like it's his first defense यार. Like WWE logic के हिसाब से, no matter how you put it, first title defense John Cena तो नहीं हारेगा. I think that's the same reason why Jey Uso versus Logan Paul didn't happen. Number one, उनका वो मेन इवेंट स्टेटस हट जाता. अगर ये जो फेयरवेल टू जॉन सीना का 2023 एंड में चालू होता और अभी खत्म होने को आता, मैं बोलता कि रैंडी ऑर्टन को जीतना चाहिए था. Exactly. If that was the case, let's say he won the championship at Royal Rumble भी दिसंबर छोड़ दिया, अगर Royal Rumble जीता होता and अभी मैच हो रहा है, I would have been like रैंडी ऑर्टन जीत रहा है.
I would have been that way, but like it was too predictable. Like अब भी जीता है. It's been not like not even a badly month. want to see Randy Orton carrying a championship भाई. बहुत टाइम हो गया है. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. I think it happens. I think it happens next year or end of this year. Like Jey Uso being a champion opens a lot of doors. कोई भी बन सकता है. I'll write a letter to Paul Levesque stating कि please Randy John Cena का जो last match है वो भी Randy Orton के साथ ही कर लो. Oh, man. It would be like a full circle. कि Randy Orton ने starting में हार गया था and last में आके जीत गया. उसके John Cena के final match में which could be in elimination chamber नहीं. हाँ elimination नहीं. Royal Rumble के पहले क्या होता है? कुछ नहीं. ठीक है. Saturday Night's main event होता है. हाँ कुछ भी वही. रॉयल रंबल के पहले प्लीज एक लास्ट मैच में जॉन सीना को हरा दो भाई प्लीज. रैंडी ऑर्टन को जिता दो. Oh man, I would still prefer Randy Orton more than Cody Rhodes winning the championship. Oh, अच्छा. Yeah, I've seen Cody Rhodes carrying the championship. Not I've again. seen Randy win it 14 times, bro. Yeah, I want to see him as a 15-time champion. Again. अच्छा, okay. I think that's a fair statement. So what How was would you that rate match? 9 out of 10, man. It was good. Okay, 9.5 out of 10. It was too good. I am solely taking that point. This was near perfect start to end until R-Truth showed. मैं R-Truth आने के बाद भी मैं वो पॉइंट उसके वजह से तो नहीं ले रहा. मैं बस मैच के फिनिश के वजह से ले रहा हूँ क्योंकि वही सेम चीज़ हुआ रेसलमेनिया में और इसके doesn't even pin. Okay, so that was the video, guys. Very extensive review. But please like, share and subscribe to the channel. Follow us on our Instagram. इसके real versions भी आपको देखेंगे वहाँ पर. अगर आपको share वहाँ से करना है तो भी better. You wanna see some more exciting content. Bye. Thank you so much, guys. Bye bye.